Now, our second lecture is how to construct, or we can say how to draw a BA thread. How to draw a BA thread? Simply, we need two things. Here we need three things. Number one is angle, simply angle. BA thread has angle 47.5 degree. After that, in case of another threads, we need thickness of the thread, or we can say we need pitch of the thread. But in case of this thread, this BA thread is round at crest and it is round at root. How much it is round at crest and how much it is round at root? It is at crest and root, it is 0.236 of depth, or we can say simply of edge. 0.236 of edge is the width, or we can say thickness. It is round at crest and it is round at depth. In this way, here it has a thickness 0.236 of edge from here. In some threads it is flat, in some threads it is round at crest and it is round at root. Now, we are not bound about depth. We are not bound about pitch. Sorry, we are not bound about pitch. How much pitch will be? जितना आपकी मर्जी है उतना आप pitch ले सकते हो. Now, how will we draw this thread? How will we construct this thread? Simply, what I will do, I will simply draw a straight line. Draw a center line from here. I will draw a perpendicular line, this line. And after that, I will draw another horizontal line. Say this line, this is horizontal line. Now, I will consider this portion as height. After that, I will take this D. First of all, I have to divide this 47.5 into two angles. That is 47.5 divided by 2. 2 2s are 4. 2 3s are 6. 2 7s are 14. 2 5s are 10. This one angle will be equivalent to 23.75 degree. That means from here, this point, I will make here, this point I will put D in this direction and I will make angle from this side. This is 0, 1, 2. I will make angle of 23.75 degree. Say for example, this is the angle of 23.75 degree. Now I will join this line here. After that, I will draw another center line. From here, I will draw another center line. I will show you how construct it. I will draw from here, I will draw a center line. This is the center line. Now, put your D here. Put your D here. Make angle 23.7 degree in this direction. Say for example here, this is the angle of 23.7. This is the angle of 23.7. After that, I will join this portion. Okay. Draw another center line from this very point. This very point. Now, put your D here. Put your D here. Make next angle 23.75 degree.
This is 23.75 degree. Join this line again. Okay. Draw from this point. Draw another center line. Draw another center line. After that, put your D here. Again, put your D here from this point. Make the angle of 23 degree, 23.75 degree here. I will make another angle. After that, draw a line parallel to this line from here. Draw another center line from this point. After that, put your D here. Extend this line. यहां से आप दोबारा बना लीजिए 23.75 एंगल, यहां पर आप बना दीजिए. आफ्टर दैट ड्राइंग दिस लाइन. उसके बाद यहां से आप दूसरा सेंटर लाइन ड्रा कर दीजिए. पुट योर डी अगेन, पुट योर डी हियर एंड मेक अनदर एंगल फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट. तो यहां से आपका दूसरा एंगल बन जाता है इस तरीके से. ड्रा हियर another center line, join this with line. Now how much is this portion? This portion is 0.5p. This portion is h, capital H. From here to here, this is pitch. Crest to crest, this is pitch. From this crest to this crest, this is pitch in case of V threads. And how much is this? This is 0.5p. Now what I have to do, it is round at crest and it is round at this angle will be equivalent to 47.5 degree. Half is equivalent to 23.75 degree. This angle will be also equivalent to this angle will be also equivalent to 47.5 degree. Now what I have to do, it is round at crest. How much it is round? It is 0.236. That means 0.236 of edge of depth, this depth. जितना ये यहाँ से होगा, for example here, let it be equivalent to 50 mm, 60 mm. जितना यहाँ से निकल रहा है हमारा, यहाँ से हमें निकलता है ये 80 mm. तो we have to multiply this 236 multiply by 80. तो जो प्रोडक्ट यहां से निकल के आ जाएगा, तो उतना mm मुझे यहां से ऊपर जाना है और उतना mm मुझे यहां से नीचे आना है. तो आई हैव टू ड्रॉ अनदर लाइन पैरेलल टू दिस वेरी लाइन. यहां से फिर मुझे यहां से जाना है इधर, तो यहां से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है यहां तक. इसी के बराबर यहां ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है, यहां आना है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है? अब मुझे राउंड रेडियस मेरी कितनी रहेगी, मसला है कि मेरी रेडियस कितनी रहेगी. यहां पर मुझे जो पॉइंट मिल रहा है, आई विल पुट माई कंपास हियर. यहां पर मैं अपना कंपास रखूंगा, इस पॉइंट पर यहां पर मैंने अपना कंपास रख दिया है. फिर उसके बाद ये सेट एब्ट्यूज एंगल जो आपका है, दिस एब्ट्यूज, दिस वन एंगल, 1, दिस इज 1, दिस इज 2. तो ये एंगल जो है, जो आपका डिवाइड हो रहा है, यहां से आपका एक एब्ट्यूज एंगल खड़ा हो जाएगा, ये वाला एंगल. अब यहां पर मुझे रखना है
this 2 1 this will be the radius, तो I will draw an arc। यहां पर मैं आर्क ड्रा करूंगा, 3 पॉइंट मुझे आएंगे 1 2 3। जैसे यहां पर ये मैंने ड्रा कर दिया है 3 पॉइंट्स, 1 2 और 3। तो आई विल ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दिस ऑब्ट्यूज एंगल। यहां पर मैं बाइसेक्टर डालूंगा, ऐसे मैंने बाइसेक्टर डाल दिया। जब वो बाइसेक्टर मैं डाल रहा हूं तो यहां पर 2 से मेरा बाइसेक्टर आ जाएगा, वो यहां से आके यहां इस पॉइंट बी पर रुकता है, यहां पर टच करता है इस सेंटर लाइन को। अब B1 इज रेडियस, तो आई विल ड्रॉ एन आर्क। यहां से मैं आर्क ड्रॉ करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, इस बी पॉइंट से आई विल ड्रॉ थर्ड लाइन। यहां से तीसरी लाइन मेरी चलेगी, इसी पॉइंट से जाएगी मेरी लाइन। जितना B1 डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस पर मुझे यहां भी और एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहां भी मुझे और एक लाइन ड्रॉ करनी है उसी डिस्टेंस पर, जितनी यहां B से 1 तक ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेके जो इस पॉइंट तक ये जो फासला है उसी डिस्टेंस पर मुझे दूसरी लाइन करनी है। अब ये रहेगा सेंटर, B रहेगा सेंटर, B1 इज द रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। उसके बाद इस पॉइंट पर मुझे आना है, तो मुझे इस वाले पोर्शन को यहां पर मुझे राउंड दिखाना है, इसको आर्क करनी है ड्रॉ। तो यहां पर आ जाऊंगा, तो ऐसे जाके भी यहां पर सेम कंडीशन। अब ये वाला पॉइंट रहेगा, ये रहेगी रेडियस, तो यहां से मुझे ड्रॉ कर राउंड बनाना है। इस वाले पॉइंट पर यहां से मुझे राउंड बनाना है, इस वाले पॉइंट पर तो यहां से मुझे राउंड बनाना है, इस वाले पॉइंट पर मुझे आना है, तो यहां से मुझे राउंड बनाना है। तो यहां से अब मैं इसको ये वाला पोर्शन बना के, उसके बाद हम यहां पर इसकी हैचिंग करेंगे। ये हैचिंग आपकी 45 डिग्री पर हो रही है। तो ये आपका एच रहा, हियर इट इज योर एच, कैपिटल एच। और ये जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपकी रही, दिस इज योर स्मॉल एच, दिस इज योर स्मॉल एच। बट हाउ मच इज दिस? दिस इज 0.236 एच एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 0.236 एच। इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन ऑफ BA थ्रेड हो गई है। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, यही डी लेना है किसी भी बी थ्रेड को ड्रा करने के लिए। फिर आपको उसके बाद अगर आपका BSW थ्रेड है, BSW थ्रेड में आपका 55 डिग्री का एंगल है, उसको आपको डिवाइड करना है 2 से, जो इसका हाफ निकल रहा है वही एंगल आपको यहां से बनाना है। उसके बाद यहां पर आपको ड्रा करना है, यहां पर आप पिच पहले नहीं ले सकते हो, तो यहां पर ड्रा करना है। फिर यहां पर आपको सेंटर लाइन ड्रा रखनी है, तो यहां पर दोबारा आप इसका हाफ डालोगे एंगल। तो इस तरीके से आप तो कंटिन्यूसली जितनी भी थ्रेड्स है वो सारे थ्रेड्स यहां से बन जाएंगे। और जो इसकी फ्लैट क्रस्ट और रूट जो है, ये डिपेंड्स अपॉन, इट वेरीज। कहीं पर आपको 0.236 एच है, कहीं पर आपको 0.176 एच है, कहीं पर 0.125 एच है। इन दिस वे दिस द कंप्लीशन ऑफ दिस BA थ्रेड इंशाल्लाह। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम BSW थ्रेड बनाते हैं।